Hi everyone, how are you doing today? Superb. Let me just wait for a couple of minutes and see. We have a very interesting topic today, which is to dress well and you feel well, right? That's one of the important topics which I wanted to take up today because we have been discussing every Sunday on various things. बहुत सारी ऐसी चीजों पे बात किया जैसे कि कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग and groom to the next version. But today, I wanted to discuss and ponder upon one of the very critical topics in grooming, which is dress well and you feel well, right? So, this can be the one of the things which is always there in your mind. क्या आता है ग्रूमिंग के अंदर? सो मैंने हमेशा बात किया है ग्रूमिंग के अंदर तीन कंपोनेंट्स है मेन. सो द वन पहला है, सबसे पहला appearance, correct? So that's what I am dressed up well today and I wanted to go with the way that I feel अगर मैं ऐसा ड्रेसअप होके जाऊंगा तभी लोगों को समझ में आएगा how important it is to dress well, right? And if you dress well you feel well, and I am feeling well today just because that I feel I am absolutely dressed well, right? So who is there watching me? Anyone who can tell me that who is there? Okay, so let's continue. The most important thing when it comes to dressing is that you should be feeling that whatever you are wearing is something which is giving you a world of confidence, and you feel that this, if I wear this dress, I am super confident and I'm really enjoying what am I wearing. You if you think that you need to wear a blazer, but then you need to always think about one thing that this is something which suits you, which looks good on you, and you feel that अगर मैंने ये पहना तो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. हाय रवि जी, ग्रेट टू सी यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and I always really look up to you. Thank you for joining. And yes, it's a beginning which is like following my passion, following my dream, and all thanks to people like you always believed and gave me a right direction at the start of my career. Thank you so much for being there. So आज का हमारा टॉपिक है ड्रेस वेल एंड यू फील वेल. एंड दैट्स वेयर आई फील दैट अब उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंपोनेंट इज दैट हम कुछ भी पहने पर लेकिन हमें कंफर्टेबल लगना चाहिए उसके अंदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पहन तो लिया, हम अच्छे तो दिख रहे हैं बट कंफर्टेबल है नहीं है. Then the other person will get to know immediately that even if you are dressed up well, you are not comfortable. The person would say, how does that matter? कितना फर्क पड़ता है उससे कि आप कैसे भी कपड़े पहनो. एक बार के लिए डेफिनेटली आप अच्छे दिख जाओगे, बट देन आफ्टर दैट व्हाट? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर इचिंग, यू आर डूइंग लाइक दिस, यू आर डूइंग लाइक दिस, एंड दैट विल एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली, नोबडी एल्स. आपका अपना कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा उससे थोड़ी देर बाद अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो. कीप दिस इन माइंड whenever you are picking up any type of clothes, be it a blazer, be it a suit, it has to fit well on your body. If it is not fitting well on your body, I can tell you that you will start feeling jittery. ऐसा होता है, कितनी दफा होता है हमारे साथ, है ना? हम कुछ भी पहनते हैं और कुछ भी अच्छे से अपने आप को कैरी करने की कोशिश करते हैं, बट उसकी थोड़ी देर बाद हमें खुद ही लगने लगता है यार अगर ये ना पहना होता तो ज्यादा अच्छा रहता, इसकी जगह पे कुछ और पिक कर लिया होता तो बेटर रहता, राइट? अगर ये डाउट अपने आप के माइंड में आने लग जाएगा तो देन यू विल फील दैट अभी नेक्स्ट टाइम ये नहीं पहनना है, कुछ और पहनना है. But then guys, be conscious because this is very important fact. You need to be cognizant of this fact that कि जब भी आप अपने क्लोथ्स पिक करते हैं वो आपको प्रॉपरली फिट होने चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से होने चाहिए. एंड आई ऑलवेज recommend my mentees that get a very good suit stitched from any of the good tailors. You can pick up a material and then you can go and get it stitched as per your body structure. ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट फिटनेस भी है. आई ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल. When it comes to body, then this is the very important component. Fitness is something which definitely will happen if you spend some time on yourself. आप अपने आप को पूरा ट्रेन कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रूटीन बना रहे हो अपना, which can take some time. बट मीनवाइल जब तक आप प्रॉपर शेप में नहीं आ रहे हो तब तक आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हो. एक अच्छा सा टेलर पिक कीजिए लोकल लेवल पे, जहां पे आप अपना एंटायर एक
बढ़िया सा ड्रेस तैयार करवा लीजिए। चाहे आप इंटरव्यूज में जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी ऐसे फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, आप एक अच्छा सा सूट पिक कर सकते हैं जो कि आपका हर जगह चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई जनरली वियर दिस काइंड ऑफ अ सूट, आई लेट मी जस्ट गेट द माइक डाउन। इस टाइप का सूट अगर मेरे पास है तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, राइट? एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज ऑलवेज इन दिस काइंड ऑफ fabric and this kind of a stitching material. If you use in the color combination, first of all, this is like royal blue, this kind of a color combination is always in. If you keep this with you, always available and always handy. In fact, sometimes I used to carry this in my car while I was working. So बहुत important है कि हम अपना एक कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर बना लें जो कि एवरग्रीन कॉम्बिनेशन हो। मेरे लिए ये एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है, व्हाइट शर्ट, a little bit of checkered is here. I like wearing such white shirts, and then a tie, a silk tie, by the way. This is very important. Silk tie always looks great. And then after that, you have to wear a shirt which is absolutely properly fitting. Make sure that your shirt is also not going here and there. Sometimes I've seen that shirt is moving just above your ankles. That should not happen. Your wrist, it should not cross your wrist. Keep that in mind. अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा और अपने आप को प्रॉपरली इन सब चीजों के ऊपर ढंग से ये प्लानिंग कर ली, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग अमेजिंग। सो पहला हमने बोला टू फील वेल इट हैज टू बी कंफर्टेबल। सेकेंड हमने बोला कि इसको टेलर से स्टिच करवाना ऑलवेज एडवांटेजियस रहेगा क्योंकि आपकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मेरे केस में व्हाट आई डू इज दैट आई गेट इट फ्रॉम Zara. Zara gives me a beautiful fitting. Always happened to me that whenever I went to Zara, I got a very good option available. And then when it comes to a tie, it is like either a Marks and Spencers or a Van Heusen. Two brands are my favorite, and I always pick up one of them. And I feel that this gives me a great combination. Look at this now. I'm looking great because I feel that this is gonna give me a lot of confidence whenever I wear this. और मैंने तीसरा चीज जो बात किया वो ये बात किया कि ये चीज आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको पार्टी में जाना है, it is evergreen. This color is always evergreen in. आपको लगता है आपको इंटरव्यू में जाना है, then also this is really good. आपको लगता है कि आपको किसी ऑफिस मीटिंग में जाना है या कुछ और है तो then also it is in. So this is an evergreen combination, guys, and it's my favorite, and I always pick up this one. Of course, make sure you get it stitched from a good tailor if your fitness is not right now up to the mark where you want it to be. Most important, guys, don't forget this, that whenever you are taking into account your dress, this relates to your appearance और आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी अपीयरेंस प्रॉपर है, कम्युनिकेशन का ये 55% हिस्सा है। 50% is your body language and your dressing, and just about 30% is your tonality, and जो बचा है that's what you speak. जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, it's just about 10-15%. But the most important thing, if you have to create a great first impression, you got to look well, you got to dress well, and hence you would feel well. That's the entire crux of it. And keep in mind, whenever you are going and wearing this kind of an attire, or probably some of your favorite colors, keep one thing in mind: it should look formal. If it's a formal function, it should not look that you're not formally dressed and you're going there and doing whatever you feel like. मजा नहीं आएगा, आपको खुद को मजा नहीं आएगा तो बाकियों को तो कैसे मजा आएगा, right? And today I'm conducting a beautiful workshop, which is a 90 minutes workshop. The links are available in my bio, be it on Instagram, YouTube, or anywhere. You can find out LinkedIn also. Everywhere the links are available. We're gonna talk about all these things in detail. That's a 90 minutes workshop. So we're gonna talk about dressing. We're gonna talk about how you look, how you feel good, and then we're gonna talk about also how to get next level confidence for your interviews. Personality development is the key component of it. And I want to share a very simple and a small story with you. Like, when I used to be like, I started my journey in corporate world in 2009, and Ravi ji is there in the call, and he has seen me at that stage also, at that time also. I had no clue that how to dress, how to look good, how to sound confident. ये सब चीजें मुझे लगता था कि कुछ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका. Of course, I completed my MBA over there. We were taught all these things, but then
जब तक इंप्लीमेंट नहीं कर लिया, जब तक वहां पे घुस नहीं गए, जब तक वो चीजों को रियलाइज नहीं कर लिया. इट टुक मी ऑलमोस्ट अबाउट 3 years, 2.5, 3 years, right? And we have a very good award at Philips, which is called one of the globally recognized award, Philips Performance Plus Award. उधर ये सब चीजों के ऊपर बहुत बहुत फोकस किया जाता है कि हाउ इज द पर्सनैलिटी, कैन दिस पर्सन रियली रियली come up with next level if given a chance. And over there your personality matters a lot, and I always recommend that keep and make sure that you have a perfect attire available with you. It'll help you reach whatever next version you have, right? So that I have written a book which is Groom to the Next Version. उस book में भी मैंने ये बहुत clearly लिखा है, and in fact I kept it with me, and from where I just wanted to show it to you guys like this. This is a clear chapter, right, where I've been talking about dressing. This is how I used to look, and this is then how I transformed myself, right? This is clearly coming out, and then there are key points which are there: gentlemen's power dressing cues, and then after that, of course, this book talks about women also, women power dressing cues, and then body language and tonality. So this is a complete chapter, and this really helps you understand. And this book's name, as you know, is called Groom to the Next Version of You. This is something which can really help you understand all these things clearly. Yeah. So पावर ड्रेसिंग, आई वुड से दिस इज बेसिकली पावर ड्रेसिंग. आपको अपने करिश्मा के लिए पावर ड्रेसिंग को मार्क्स देने होंगे, वेटेज देनी होगी. जितना जल्दी आप वो वेटेज देंगे, जितना जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना जल्दी उसको डेवलप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है. सी देखिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है. एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील दैट हाउ डज दैट मैटर इवन इफ आई ड्रेस वेल और डजंट ड्रेस वेल. बट देन स्लोली एंड स्टेडली आपको रियलाइज होने लग जाएगा when you will see that people who are dressed well, they feel well. It is not about anybody else, it is first of all about you yourself. If you want to look good, guys, go on and wear a great combination. It could be blue, it could be gray, navy blues are always in, that's why I talk about it. And then otherwise there are many other combinations which are available these days. Beige, I saw recently that someone wearing a beige suit was amazing. So great color combinations are available. You're gonna get it and wear them whenever there's an important function. और उसके साथ साथ ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको कंफर्टेबल रहना है, अपने हिसाब से उस चीज को बनवाइएगा, स्टिच करवाइएगा, तभी उसका फायदा है. अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है. Right? So that's what I wanted to discuss today quickly, guys. Thank you so much for coming live and understanding what I have to share with you. Every Sunday I come live. Start looking at my Instagram channel also. There I post every day 1 minute reel which talks about all these tips and will help you groom to the next version of you. Right? That's it. Thank you for joining me. See you next Sunday live. Bye-bye. God bless.